Hello guys, I am Akhil and in today's video we are going to learn about the HTML from scratch for beginners. आज के इस कोर्स में हम ब्रेक डाउन करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ HTML एंड उसके टैग्स सम टैग्स ओके वी विल स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट बेसिक्स मतलब बिल्कुल नॉर्मल बेसिक्स फॉर द बिगिनर्स एंड स्ट्रक्चर समझेंगे HTML का. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कोर्स आते रहेंगे तो डू लाइक द वीडियो. ओके HTML is the hypertext markup language. HTML is a markup language for structure and presentation of world wide web contents कि जो भी हम कंटेंट देखते हैं over the web browsers on www websites that's main structure मतलब basic structure HTML से बनता है all right. तो HTML5 सपोर्ट करता है HTML and XHTML style syntax, HTML का syntax और HTML XHTML style syntax. Okay, some features of HTML. Yeah, learning is very easy, like it's the easiest language you will ever learn. Adding links where we can add references, we can add hyperlinks. There are some links we can add in the code, hyperlinks. Okay, display documents on platforms like Mac, Windows, Linux, etc. Like HTML can work on any platform, like it's the basic language that can work on old Windows, everything. Okay, adding videos and graphics make it more attractive, like we can add videos, graphics, even we can add audio files, playing animations, we can do lot of stuff. It is a case insensitive language, like case insensitive means like capitals and non-capitals doesn't matter here. Let's see the basic HTML structure. Basic HTML structure consists of first document type HTML tag. Okay, HTML tag show that we have written the code inside these HTML tags. Okay, in the HTML here comes the head and the body tag. Head has some title, meta tags, and body will have all the content we will write in the code. Okay, HTML structure. Document type HTML, doc type HTML. ठीक है, declares the document type and version of the HTML being used. In modern HTML, this is usually doc type HTML. Next is the HTML tag, the root element that wraps and add HTML code. I told you earlier कि HTML tag के अंदर ही सारा HTML का कोड आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा. And it will show that there is a HTML document. Okay, HTML document में mainly head and body आते हैं. Head will contain all that title and all, contains the meta information about the HTML code such as title, character set, link, linked style. Is like we when we add CSS into the HTML, we will add in the head. Okay, head tag. और इसके अंदर आता है टाइटल टैग के अंदर वी विल राइट द टाइटल फॉर आवर वेब पेज एंड इट विल शो इन आवर वेब ब्राउजर्स टाइटल बार. ओके, टाइटल वी कैन वही सेम टाइटल. एंड लास्ट इज द बॉडी टैग. बॉडी टैग में मेन कंटेंट आएगा वेब पेज का, लाइक वट एवर वी राइट, कोड, text, images, links, forms, etc. Okay, okay, we will learn more about the heading tags. Heading tags in HTML. Heading tags are used to define headings and subheadings, like the heading of the web page and their subheadings. H1 tag is the largest and most important, while H6 is the smallest. Okay, first see the code. In the body we have written H1 heading 1, H2 tag inside heading 2. Like it will clarify you in the output. I will show you the output कि H1 के अंदर heading लिखा है, H2 के अंदर heading 2 लिखा है. Okay, we will see the output. You can see the output. हेडिंग टैग सबसे बोल्ड लार्जेस्ट, हेडिंग 2 उससे थोड़ा कम है, हेडिंग 3 उससे थोड़ा कम है. ओके, हेयर बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हेडिंग 3 2 times. ओके, इग्नोर दैट. Heading 4 is smaller than heading 3, heading 5, heading 6, so on. Like H1 is largest and H6 is the smallest. Okay, got it. Next comes the common tags. We are going to learn about some common tags used in the HTML. HTML में some common tags. ठीक है. First one is paragraph tag, यानी कि P tag. We can denote the paragraph tag as P tag. ठीक है. P defines the paragraph of the text commonly used to structure textual content of the, like I basically tell you क्या होता है कि P tag में you can see in the code, like P tag के अंदर हमने सब लिखा है this is a paragraph tag and some lorem text inside it. Let's see the output में it will come something like this कि this is paragraph tag and like all is written in the paragraph. जब end होगा तो नीचे next line में continue हो जाएगा, like there is no space in between. Even if in the code I have given a I have started the lorem tag, lorem text जो मैंने लिखा था वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया था, बट इट विल शो इन द सेम लाइन. जब एंड तक जाएगा उसके बाद आगे कंटिन्यू कर देगा नेक्स्ट लाइन में. ओके, गॉट इट. Second common tag is our list tag. List tag is used to create some list. List can there are two types of list we can create: unordered and ordered. Okay,
UL denotes the unordered list and OL denotes the ordered list. ठीक है, UL is unordered एंड OL इज़ द ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और ABC और समथिंग लाइक दैट. और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी ना, उसमें बुलेट्स होंगी या कोई भी सिंबल वगैरह आ सकता है इन फ्रंट ऑफ द लिस्ट. ओके, लिस्ट में जो भी हम आइटम्स ऐड करेंगे. एंड LI रिप्रेजेंट द लिस्ट आइटम्स. जो भी आइटम्स होगी वो हम LI टैग से डिनोट करेंगे. लेट्स सी इट्स कोड. कोड में देखिए, बॉडी के अंदर आया OL टैग. OL टैग के अंदर है हमारा H1 टैग. H1 टैग हमने दिया फॉर हेडिंग की ऑर्डर लिस्ट शो करने के लिए. ठीक है, उसके अंदर LI मीन्स की आइटम्स कौन सी हैं लिस्ट के अंदर. एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो. ठीक है, तीन आइटम्स आ गए लिस्ट के अंदर. दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट यानी कि इसके साथ नंबरिंग वगैरह आएगी. और नीचे आ गया UL टैग. UL टैग डिनोट्स अनऑर्डर्ड. सो हमने H1 टैग के अंदर फॉर योर क्लियरेंस शो कर दिया अनऑर्डर लिस्ट है ये. ठीक है, उसमें भी एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो तीनों ऐड कर दिए. ओके, लेट्स सी द आउटपुट. आउटपुट में आया, ऑर्डर लिस्ट में देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग आ गई और अनऑर्डर में बुलेट्स आ गई. ठीक है, these are the default settings for this. We can change this. जैसे 1 2 3 4 को we can do ABC and all, and unordered में भी we can change the shapes. Okay. Okay, third common tag is anchor tag. Anchor tag में anchor tag creates hyperlinks. I told you we can create hyperlinks. Okay, links to the other web pages or resources. Utilizes the href attribute to specify the destination URL. You can first see the code. बॉडी के अंदर हमने डाला एंकर टैग यानी कि ए इज़ फॉर एंकर टैग. HREF हमने डाला www.google.com कि गूगल का लिंक खुल जाए जब हम क्लिक करें इस टेक्स्ट पे. दिस इज़ द लिंक टेक्स्ट. जो लिंक टेक्स्ट है उसको अगर हम क्लिक करेंगे तो गूगल खुलेगा. लेट्स सी द आउटपुट ऑन द वेब पेज. ओके ओके, सी द आउटपुट. आउटपुट में है कि उसको टेक्स्ट को इट इज़ ब्लू इन कलर. आफ्टर यू क्लिक इट बिकम्स पर्पल. ओके, फर्स्ट ब्लू होगा. दिस इज़ द लिंक टेक्स्ट. जब हम इस लिंक टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो आउटपुट हमारी गूगल खुल जाएगी. इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट देन इट विल ओपन द गूगल. और वी कैन इवन स्पेसिफाई अदर वेब पेजेस की. अगर हमने कोई और कोड लिखा है वेब पेज का HTML का, तो वी कैन लिंक इट विद दिस वेब पेज यूजिंग इट एंकर टैग. ओके, fourth tag is image tag. Images, we can add images to the web pages. I told you earlier we can add images, videos and audios. ठीक है, image tag के लिए img tag यूज़ करते हैं. Images on the web pages require the src attribute to indicate the image file source. src stands for source file. Okay, let's see the code देखते हैं हम. बॉडी टैग के अंदर आएगा img tag is the main tag. उसके अंदर src tag will indicate the file we are going to use as the image in the web page. Okay, web page में book1.jpg फाइल है मेरी एक इमेज की. we will show in the output. Okay, देख पाओगे आप. ऑल टैग इज़ यूज फॉर द बुक इमेज. जिसको भी इमेज नहीं शो होगी यानी कि मे बी वट एवर द रीज़न इज़ कि लोड नहीं हुई या ब्राउज़र पुराना है, वट एवर द रीज़न इज़, इट विल शो द टेक्स्ट बुक इमेज की बुक इमेज है यहाँ जिसको भी शो नहीं हो रही. और हाइट और विड्थ मैंने सेट कर दी 100 पिक्सल एंड विड्थ ऑल्सो 100 पिक्सल. ओके, नाउ सी द आउटपुट. आउटपुट में यू कैन सी दैट इन द वेब पेज मेरी इमेज आ गई है. बुक की इमेज है. दिस वन इज़ अ book1.jpg इमेज जो शो गई. दिस वॉज सेव्ड इन माई फाइल्स वेयर माई कोड इज़. ओके okay, fifth tag we are going to study about is button tag. Button tag is used, same button आएगा. टैब बटन टैग creates a clickable buttons. जो buttons हम देखते हैं ना वेब पेजेस में, जैसे submit button and whatever the button often used in JavaScript for interactive like when we click on submit for form तो submit हो जाता है form in the back end. तो it is kind of interactive. तो इसका हम कोड देख लेते हैं. बॉडी के अंदर आएगा हमारा बटन टैग. बटन टैग का टेक्स्ट क्या रखना है कि बटन के अंदर क्या टेक्स्ट आए, वट एवर वी वॉन्ट द टेक्स्ट. आई हैव रिटन सबमिट लाइक सबमिट बटन. वी कैन सी द आउटपुट. आउटपुट में सबमिट बटन आ गया ऊपर. वी कैन एडजस्ट its location or whatever using CSS, but this is normal button we can see. Okay, नेक्स्ट हम समझते हैं HTML फॉर्म्स. HTML फॉर्म्स इज द नेक्स्ट टॉपिक. फॉर्म स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉर्म टैग यूज होकर स्ट्रक्चर बनता है. इनसाइड द बॉडी पहले मैंने H1 टैग दे दिया कि बेसिक फॉर्म एग्जांपल है. ओके, फॉर्म टैग आ गया. फॉर्म टैग के अंदर एक्शन सबमिट एक्शन है. मेथड पोस्ट है. मेथड अभी भी रहने दो. मेथड लेबल फॉर नेम कि मतलब कि नेम के लिए लेबल आ गया कि वो नेम का है बॉक्स, फॉर्म बॉक्स. ओके, इनपुट टाइप हमने ले ली टेक्स्ट की. हमें टेक्स्ट चाहिए नेम वाले में टेक्स्ट आएगा बंदे का. आईडी नेम. रिक्वायर्ड मीन्स कि फिल करना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सबमिट नहीं होगा. ओके, रिक्वायर्ड इज अ फील्ड. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड विद द नेम रिक्वायर्ड. सेकेंड वी हैव एडेड फॉर ईमेल का डाला. उसमें इनपुट टाइप ईमेल आ गई कि @ होगा तो ही वो फिल होगा रिक्वायरमेंट. हम इसको समझते हैं. आउटपुट देखते हैं इसकी.
Third field is the password field. We will write the password here. Okay, sorry. And we have added a submit button here and form closed. Let's see the output में you can see basic form example h1 जो हमने डाला था h1 टैग के साथ वो आ गया ऊपर. नेम ईमेल और पासवर्ड जो आपको दिख रहा है कॉलन के पहले, दैट इज द लेबल्स वी हैव एडेड, नेम ईमेल एंड पासवर्ड. ओके, नेम का कॉलम आ गया, ईमेल का आ गया, पासवर्ड का कॉलम आ गया. एंड नेक्स्ट इज द सबमिट बटन जो हमने बटन ऐड किया. ओके, अंडरस्टूड द फॉर्म्स. अब लेबल टैग के बारे में समझते हैं हम नेक्स्ट में. लेबल टैग एसोसिएट करेगा वही जैसे मैंने आपको बताया कि लेबल देगा किसी भी फॉर्म के कंटेंट को. ओके, नीचे कोड आ गया, यू कैन सी लेबल फॉर यूज़र या किसी के लिए फॉर पासवर्ड एंड लेबल क्लोज. वन इज़ द इनपुट टैग. इनपुट टैग में वही वी कैन ऐड टेक्स्ट फॉर नेम एंड ऑल, पासवर्ड फॉर पासवर्ड्स, ईमेल के लिए ईमेल है, चेक बॉक्सेस लाइक यू हैव सीन इन कि टिक बॉक्सेस जो होते हैं, एंड रेडियो बटन्स ऑल्सो वी कैन ऐड. एंड फाइनली वी हैव अ सबमिट बटन, लाइक बटन फॉर सबमिट. ओके, the next topic is table tags. Table tag in HTML is used to create tables, like tables create करने के लिए for better clarification of content और better arrangement of content. सिंपली हम कोड देखते हैं, बॉडी के अंदर हमने सिंपल टेबल टैग लिया, उसके अंदर टेबल कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं और टेबल टैग क्लोज. ओके, अब टेबल के एलिमेंट्स देखते हैं. टेबल में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? टेबल रो होती है, टेबल डाटा और हेडर. टेबल रो को डिनोट करते हैं हम टी आर से, टेबल डाटा को टी डी से, एंड टेबल हेडर को टी एच से. अब टेबल रो डिफाइन करती है एक टेबल की रो को, और टेबल डाटा जो भी हम डाटा करेंगे ऐड इनसाइड द टेबल रो दैट विल कम इन द टी डी defines a cell in the table and contains data typically used within a tr. टेबल रो के अंदर यूज होता है टिपिकली. ओके, टी एच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर. डिफाइंस हेडर सेल इन द टेबल, जो मतलब कि जो टॉप कॉलम होगा ना उसका टेबल का, उसकी उसको डिफाइन करता है ये. टी एच विल, इसका मोस्टली जो टेक्स्ट होता है देखो इसमें लिखा है टेक्स्ट इन टी एच इज़ यूजली बोल्ड एंड सेंटर्ड, कि बोल्ड टेक्स्ट होगा दैट विल शो कि ये हेडिंग्स हैं टेबल की रोज के. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल में यू कैन सी बॉडी लिया है, उसके अंदर टेबल बॉर्डर 1 पिक्सल, यानी कि जो टेबल का जो बॉक्स होगा ना दैट विल बी ऑफ 1 पिक्सल 1. ओके, वी कैन डिफाइन 2 3 4 वट एवर वी वॉन्ट, हाउ थिक वी वॉन्ट द बॉर्डर. inside that we have added the tr tag, you know, table row tag. first row के अंदर हम we will add headings, then that means कि th डालेंगे हम. th is for table header. heading, 2 headings डाल दी हमने, यानी कि 2 rows हो जाएंगी. we closed that tr. अगेन वी स्टार्टेड द टीआर के अंदर अब हमने डाटा ऐड करना है कि टेबल के अंदर जो हेडिंग्स के नीचे जो डाटा आएगा, डाटा 1 डाटा 2 हमने सबने टी के साथ ऐड कर दिया, यानी कि टी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा. डाटा ऐड कर दिया, देन अगेन टीआर क्लोज, अगेन वी एडेड 3 4 डाटा एंड देन द टेबल टैग क्लोज. लेट्स सी द आउटपुट. यू कैन सी देयर आर 2 हेडिंग्स बोल्ड में है, एंड नीचे डाटा आ गया, डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा 4 सीक्वेंस वाइज. अगर हम, और हमने वो जो टेबल बॉर्डर दिया था, अगर हम बॉर्डर नहीं देते वो बॉर्डर 1, देन देयर विल बी नो बॉर्डर अराउंड दिस टेक्स्ट. ये ब्लैंक हो, मतलब आसपास में जो बॉर्डर्स बने वो नहीं होते हैं. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कमेंटिंग आर कोड इन HTML. जैसे मैंने HTML कोड ऊपर भी कमेंट किया था, इफ़ यू हैव सीन, तो कमेंट्स विल हेल्प कि अगर इफ़ सम अदर कोडर और समवन एल्स इज रीडिंग योर कोड, ही विल बेटर अंडरस्टैंड द कमेंट्स. लाइक अगर आपने कोई टेबल टैग में कोई टेबल इन्फॉर्मेशन दी, यू कैन स्पेसिफाई द टेबल नेम इन द कमेंट कि दिस इज दिस टेबल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, जैसे अब यू कैन सी इन दिस कोड हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड. To comment out this hello world, we will simply we use alt key and that slash. You can see this one slash, this slash, and then this will comment out. Like we can use this commenting technique in VS Code, like for any JavaScript में automatically he will detect that this is JavaScript, and it will use that comment out code tag automatically कि वो अपना specify कर देगा syntax क्या है. You just have to use alt and this backward slash. That's all for this basic HTML course. Hope you enjoyed this. Thank you for watching the video whole, and don't forget to like the video and subscribe to the channel for more such course videos. Thank you. Bye.